Okay, the answer is je vais bien. Next conversation phrase. Messi. Yeah, Je vais bien, Messi. merci. Next phrase is je ne vais pas bien. Okay, or we can also call as je ne vais pas très as a avec l'accent très bien. Okay, very good. And in this we can call as je vais très bien. Très bien, merci. Merci. Après la question quel âge avez-vous? Quel âge avec la chapeau? Quel âge avez-vous? C'est la question. Quel âge avez-vous? Ave, après la ave, we need to put a small dash. Okay, to segregate ale and vous. Okay, quel âge avez-vous? Or we can also call in other manner or in informal way, which is quel âge as-tu? This is informal way to ask what is your age. Okay, quel âge as-tu or quel âge avez-vous? How does we answer this question? The answer is j'ai la conjugation est avoir. J'ai 23 ans. Okay, par exemple, j'ai 23 ans. Or we can also call as a j'ai avec la conjugation avoir. J'ai 19 ans. D'accord. La nouvelle phrase we can call as a how do we say the what is your name? Okay. Comment vous appelez? Comment vous appelez-vous? This is one way. In other way, we can call as a comment tu t'appelles. D'accord. Comment tu t'appelles? On the other hand, we will also call as a vous vous appelez. Vous vous appelez comment? Okay, सबका एक ही meaning है. What is your name? So we can answer this question as je m'appelle. Okay, je m'appelle. Je m'appelle. Appelle, c'est a, a, a. Okay. Je m'appelle whatever name you have. For example, je m'appelle Tarun.
ओके, और जॉन और निको, वट एवर नेम यू हैव, और लक्ष्मी, okay, whatever name you have, we can put this name here. Okay, je m'appelle Tarun John. Okay, ensuite il y a une phrase enchanté. Enchanté. E N C H A N T E. Okay, this is this is the avec l'action enchanté. L'action grave. Enchanté, c'est masculin. How do we write in feminine? Enchanté. आप avec la deuxième और de enchanté in féminin. D'accord. Après ça, il y a une nouvelle phrase qui s'appelle pouvez-vous parler français? Pouvez-vous parler français? Attends. Ok. Pouvez-vous parler français? Pouvez-vous parler français? Non. Parler français. Pouvez-vous parler français? Ok, c'est la question. Do you speak French? La réponse la question est oui और नो. ओके, यहाँ पर OU का मतलब और से है, ठीक है. इन फ्रेंच वी कॉल्ड एज और ओ, ठीक है. या फिर एक आंसर का हो सकता है je ne parle pas, je ne parle pas français. और je parle français. और je parle, आंसर इज नो. je parle हिंदी. ओके, इसका आंसर ले सकते हैं वी, je parle français. और दूसरी तरह से मतलब सकते हैं इसको can also called as we, je parle français. français. Okay. आप français और petit we can call little bit. Okay. I can speak French little bit, or I can little bit speak French. Next phrase is s'il vous plaît. तो पता ही है आपको सभी को s'il vous plaît. इसका ऑर्थोग्राफ पता कैसे? S apostrophe s'il vous
प्ले। ओके, ए के ऊपर आएगा शापो, s'il vous plaît. This is the formal way. How do we call it in informal way? S'il te plaît. Informal. Okay, if you are discussing with your friend or colleague or you have in your family, you can call it as s'il te plaît. In formal way, you can call it as s'il vous plaît. Okay. How do we say sorry in French? Je suis désolé. This is the ces phrase est complète. Avec l'action désolé. Je suis désolé, madame et monsieur. तो पादन भी तो बोलते हैं, पादन। हाँ हाँ, वही बता रहे हैं। désolé और पार्डों। ओके, ये वही वाला पार्डों है जो इंग्लिश में पार्डन होता है। या फिर हम डायरेक्टली ये इतना लंबा फ्राज ना बोल के सीधे भी बोल देते हैं, désolé। désolé। okay, how do we say welcome, it's okay, not mention? How do we say de rien? d'accord, de rien, it's okay or no problem. How do we say congratulations in French? Félicitations. Félicitations avec le pluriel. Congratulations. Félicitations. Okay. How do we say when मैं एक फ्राज बोलता हूँ आपको बार बार, जो है est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu compris? Or we can also call as in formal way comprenez, P-R-O-N-A-Z, comprenez-vous और compris you. Informal, formal. Est-ce que tu compris or est-ce que vous comprenez? We can call it as informal way. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Comprenez. Okay. So these are the general used phrases which we use in French in normal conversation.
सर लास्ट का शो Okay. Est-ce que tu comprends? Je ne comprends pas. C'est one type of answer. Or je comprends. Je comprends. Okay. Je comprends or je ne comprends pas. I don't understand or I understand. Il y a wait. Il y a a problème avec la orthographe. La correct orthographe est C-O-M-P-R-E then N-D-S. Okay, comprenez Q. Same answer we can apply on these question as well. D'accord? Est-ce que tu comprends? Je ne no. We can also call it as a no. Okay, whenever we start the question from est-ce que, which means directly do you, और आंसर हमेशा yes no में जरूर होना चाहिए. सर नीचे का नहीं दिख रहा. Just a moment. Okay, whenever we are starting the question from ask, this is mandatory to give the answer in yes or no. Okay, it means do you. Whenever we are using ask, which means कहाँ लिखूँ उसमें जगह ही नहीं है. Ask directly means do you. As simple as in the English. यहाँ पे जिसमें हम जब इंग्लिश में बात करते हैं तो इंग्लिश में डू यू का जो आंसर होता है यस नो में होता है, और उसके बाद अपनी आर्ग्यूमेंट या फिर अपना जो स्टेटमेंट है वो बता सकते हैं. ओके